Paragraph number 10. Women's entrepreneurship is not only beneficial to the women themselves, but it also brings several advantages to the broader community and society. Some of the key benefits include वोमेंस एंटरप्रेन्योरशिप ख़वातीन की कारोबारी महारत इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल, ना सिर्फ फ़ायदेमंद है टू द वोमेन ख़वातीन के लिए दम सिर्फ अपने यानी ना सिर्फ वो उनके अपने लिए फ़ायदेमंद है, बट इट आल्सो ब्रिंग्स बल्कि ये लाती हैं सेवरल एडवांटेजेस बहुत से फ़ायदे टू द ब्राडर मतलब वसी कम्युनिटी बिरादरियाँ एंड सोसाइटी और माशरे के लिए, यानी माशरे और बिरादरियों के लिए इर्द गिर्द के जो हमारे मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए बहुत से फ़ायदे लाती हैं. सम ऑफ द की बेनिफिट्स इंक्लूड, इनमें से कुछ अहम जो फ़ायदे हैं वो मज़ैल हैं या फिर शामिल हैं. ख़वातीन की कारोबारी सरगर्मियाँ न सिर्फ ख़ुद ख़वातीन के लिए फ़ायदा मंद हैं बल्कि ये वसी तर कम्यूनिटी और माशरे के लिए भी कई फ़वाइद पहुँचाती हैं. कुछ अहम फ़ायदे मंदरजा झैल हैं. इकॉनमिक ग्रोथ, मुआशी तरक्की. When women start businesses, they contribute to the national economy by creating jobs, generating income and boosting productivity. When women start businesses, जब ख़वातीन कारोबार शुरू करती हैं, they contribute, वो असर डालती हैं to the national कौमी इकानमी मईशत, नेशनल इकानमी कौमी मईशत में by creating jobs, नौकरियाँ पैदा करके, generating income, आमदनी पैदा करके, एंड बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर. मुआशी तरक्की, जब ख़वातीन कारोबार करती हैं तो वो मुलाज़मतें पैदा करके, आमदनी बढ़ाकर और पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करके कौमी मईशत में भी हिस्सा डालती हैं. This results in a more dynamic economy that benefits everyone. This results in, इससे नतीजा ये निकलता है a more dynamic economy के ज़्यादा मुतहर्रिक मईशत तैयार होती है. That benefits everyone, जो कि सबको फ़ायदा पहुँचाती है. इसके नतीजे में ज़्यादा मुतहर्रिक मईशत वजूद में आती है जो सबके लिए फ़ायदेमंद होती है. जॉब क्रिएशन यानी मुलाजमतों की तख्लीक. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफन एम्प्लॉय पीपल फ्राम देयर कम्युनिटीज, प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली फॉर अदर वुमेन एंड यूथ. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यानी कारोबारी ख़वातीन ऑफन अक्सर एम्प्लॉय भर्ती करती हैं पीपल उन लोगों को फ्राम देयर कम्युनिटी जो कि उनकी बिरादरियों में रहते हैं या उनके करीब रहते हैं. प्रोवाइडिंग जॉब्स उनको नौकरियां फराहम करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौके देती हैं, एंड रिड्यूसिंग और कम करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी स्पेशली ख़ास तौर पर फॉर अदर वुमेन दूसरी ख़वातीन के लिए एंड यूथ और नौजवानों के लिए. मुलाज़मतों की तख्लीक. ख़वातीन कारोबारी शख्सियात अक्सर अपनी बिरादरी के अफराद को मुलाज़मत देती हैं जिससे मुलाज़मत के मौके पैदा होते हैं और बेरोज़गारी कम होती है ख़ास तौर पर दीगर ख़वातीन और नौजवानों के लिए. एम्पावरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन यानी आइंदा आने वाली नस्लों को बाख्तियार बनाना. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सर्व एज रोल मॉडल्स फॉर अदर वुमेन बाय विटनेसिंग वुमेन सक्सीड इन बिजनेस. Younger generations are inspired to pursue their ambitions. Women entrepreneurs serve as role models. जो कारोबारी ख़वातीन होती हैं वो खिदमत करती हैं किस तौर पर, एज रोल मॉडल बतौर नमूना, फॉर अदर वुमेन दूसरी ख़वातीन के लिए, यानी वो दूसरी ख़वातीन के लिए बतौर नमूना ख़ुद को पेश करती हैं. बाय विटनेसिंग वुमेन सक्सीड, गवाह बनकर ख़वातीन की कामयाबी की. इन बिजनेस कारोबार में यंगर जनरेशन नौजवान नस्लें आर इंस्पायर्ड वो मुतासर होती हैं टू परस्यू देयर एम्बिशन अपने ख्वाबों की तकमील के लिए. आइंदा नस्लों को बाख्तियार बनाना. ख़वातीन कारोबारी शख्सियात दीगर ख़वातीन के लिए बतौर नमूना काम करती हैं. ख़वातीन को कारोबार में कामयाब होता देखकर नौजवान नस्लें अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मुतासर होती हैं. कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी समाजी तरक्की. Many women entrepreneurs start businesses that address local issues such as education, healthcare or access to resources. Many women entrepreneurs, बहुत सी ख़वातीन ताजिर that start business जो कि कारोबार को शुरू करती हैं, that address जो कि हल करती हैं या नुमाया करती हैं local issues
مقامی مسائل کو سچ جیسا کہ ایجوکیشن، تعلیم، ہیلتھ کیئر، صحت کی سہولیات، access to ریسورسز یا پھر وسائل تک رسائی۔ بہت سی کاروباری خواتین کاروبار شروع کرتی ہیں جو کہ مقامی مسائل جیسا کہ تعلیم، صحت کی سہولیات اور وسائل تک رسائی کو حل کرتے ہیں۔ This creates a positive social impact, improving the quality of life for people in their communities. This create یہ پیدا کرتا ہے a positive social impact، ایک مثبت سماجی اثر، improving the quality معیار کو بڑھا کر of life زندگی کے of people for people لوگوں کے لیے in their communities ان کی برادریوں میں۔ یہ ایک مثبت سماجی اثر پیدا کرتی ہیں جو ان کمیونٹی کے لوگوں کے لیے زندگی کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ پروموٹنگ جینڈر ایکویلٹی یعنی صنفی برابری کا فروغ۔ When women participate in the economy as entrepreneurs, they challenge gender stereotype and promote equality. When women participate جب خواتین حصہ لیتی ہیں in the economy معیشت میں as entrepreneurs بطور کاروباری they challenge وہ للکارتے ہیں یا پھر مقابلہ کرتے ہیں gender stereotype جینڈر صنفی stereotype دقیانوسی تصورات یا پھر پرانے تصورات کو and promote equality اور فروغ دیتے ہیں برابری کو۔ صنفی برابری کا فروغ بنانا۔ جب خواتین معیشت میں بطور کاروباری شخصیت حصہ لیتی ہیں تو وہ دقیانوسی تصورات کو للکارتی ہیں اور برابری کو فروغ دیتی ہیں۔ This success encourages society to view women as capable leaders and decision makers. This success یہ کامیابی encourages حوصلہ دیتی ہے سوسائٹی معاشرے کو to view women as capable کہ وہ لوگوں کو اس قابل خواتین کو اس قابل دیکھیں لیڈرز یعنی کہ بطور رہنما اینڈ ڈیسیژن میکر اور فیصلہ ساز کے طور پر۔ ان کی کامیابی معاشرے کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ خواتین کو قابل رہنما اور فیصلہ ساز کے طور پر دیکھ سکیں۔ انوویشن اینڈ پرابلم سالونگ جدت اور مسائل کا حل۔ Women often bring unique perspectives and innovative solutions to the problems they address through their business. Women often bring unique perspectives. خواتین اکثر لاتی ہیں unique منفرد perspectives نقطہ نظر and innovative solutions اور تخلیقی حل to the problems ان مسائل کا they address جو ان کا وہ سامنا کرتی ہیں through their business اپنے کاروبار کے دوران۔ خواتین اکثر منفرد نقطہ نظر اور ان مسائل کا جدید حل پیش کرتی ہیں جن کا سامنا وہ اپنے کاروبار میں کرتی ہیں۔ Their ventures can lead to new ways of thinking, improving product, services and even social conditions. Their ventures ان کی مہمات ان کے منصوبے can lead to new ways نئے راستوں کی طرف لے کر جاتے ہیں of thinking سوچنے کے طریقے ways of thinking سوچنے کے طریقے improving بہتر بنا کر پروڈکٹس ان کی مصنوعات کو سروسز خدمات کو اینڈ ایون سوشل کنڈیشنز اور یہاں تک کہ معاشرتی حالات کو۔ ان کے کاروباری منصوبے نئے انداز میں سوچنے کا سبب بن سکتے ہیں جو مصنوعات خدمات اور یہاں تک کہ معاشرتی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔